Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe. Jai Gaurani Thai, Gaurani Thai, Gaurani Thai, Jaya Gaurani Thai. Nithai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. जय स्वाद परमहंस प्रविजिकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत संस्वरूपात की इस्कॉन बीबीडी संस्थापकाचार्य स्वरूपात की जय निथाय गौर प्रेमानंदी सामवेद भक्तुंद की सामवेद भक्तुंद की सामवेद भक्तुंद की जय श्री गुरु गौरांग की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता यथारूप पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण के अंतर्गत श्लोक क्रमांक 41 इसको लेंगे। शंकरो नरकायैव शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः लुप्तपिण्डोदकक्रियाः शंकरो नरकायैव
कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः शंकरो नरकायैव माताजी शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डो शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः शंकर नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः शंकरः ऐसे अवांछित बच्चे नरकाय नरकीय जीवन के लिए एवं निश्चित ही कुल प्रणानम कुल का वध करने वाले के मालूम के उनके कुलस्य कुल के च भी पतंती गिर जाते हैं पितरः पितृगण ही निश्चित ही ऐशाम इनके लुप्त समाप्त पिंड अर्पण की उदक तथा जल की क्रियाकृत्य अनुवाद तथा तात्पर्यशील ऐसी भक्तिवेदांत संस्कृत की अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के परखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त की जाती हैं। तात्पर्य सकाम कर्म के विविधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए।
यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद को खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को उस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं कि केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उभार सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 11वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 41 में कहा गया है, देवर्षि भूतात्मां पितॄणां न किंकरो नायं ननीच राजन् सर्वात्मैः शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहर्त्य कर्तम्। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का यहाँ जो श्लोक जो है, यहाँ जो अर्जुन अपना जो है एक जो विचार जो प्रकट कर रहे, तो उसके अंतर्गत यहाँ बताया गया है अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो यहाँ आप देखते हैं अवांछित संतान। यहाँ सबसे पहले क्या बताया है कि अवांछित संतानों की वृद्धि। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि खास करके मच्छर, चूहा, बिल ये ऐसे जो है, इनको ज़्यादा करके मनुष्य समझता है कि ये लोग अवांछित है कि नहीं। तो लेकिन मनुष्यों में भी हम देखते हैं कि शास्त्रों के अनुसार अगर संस्कार अगर किए नहीं जाते तो शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जो संस्कार जो है सम इति आकार इति संस्कार। तो कोई भी एक चीज़ हम बनाते हैं तो उसका पहले एक डाय बनता है। अभी आप ये देखते हैं करताली बना है तो इसका जो है वो रस
ये लोहा जो पीतल है इसको गर्म करके इसका एक ये बनता है डाई, उसमें वो रस डालते हैं, फिर इसको थोड़ा पॉलिश किया जाता है। तो उसी प्रकार मनुष्य में भी जब भी पति पत्नी जब भी वो अगर गर्भाधान संस्कार नहीं करते तो शास्त्रों के अनुसार तो फिर क्या होता है, अवांछित जो है संतान जो है उत्पन्न होती है। तो ऐसे पुराणों में बहुत कथाएं हैं, आपको थोड़ा हम संक्षिप्त में उसके बारे में बताएंगे। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि महाभारत में सबसे बढ़िया उदाहरण है वो है दुर्योधन का। दुर्योधन का जब भी जन्म हुआ था तो सारे गधे, कौवे और अन्य जो अशुभ पशु है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। और उधर जो दुर्योधन का जो कुंडली बनाने वाले ब्राह्मण बैठे थे, वहाँ भीष्म पितामह थे, फिर विदुर जी थे, कृपाचार्य थे। तो उन्होंने कहा अरे बताओ क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये अवांछित, ये योग्य पुत्र नहीं है, ये तुम्हारा कुल का नाश करने वाला है। किसको बताया? धृतराष्ट्र को उन्होंने बताया। लेकिन एक पुत्र मोह होता है कि नहीं? हाँ, पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इस पुत्र को त्याग नहीं सकता। तो आगे क्या हुआ? महाभारत है कि नहीं? तो आप देखते हैं कि महाभारत का कारण अन्य लोगों का भी ये किया जाता है। लेकिन आप देखते हैं कि दुर्योधन जो है, क्योंकि अभी हम जो ये पहला अध्याय पढ़ रहे हैं इसमें ज़्यादा करके दुर्योधन का ही ज़्यादा हिस्ट्री आता है। तो अवांछित जो संस्थान है, तो दुर्योधन के बारे में तो आकाशवाणी तक हुई थी। आजकल तो आकाशवाणी कुछ होती नहीं हाँ, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि हम लोग कोई असुर नहीं है, चलो जो भी है। फिर दूसरा एक देखते हैं कि ये था शिशुपाल। आप देखते हैं कि शिशुपाल जब भी उसका भी जन्म हुआ था, वो भी जो है गधे के माँ पे रेक रहा था जोर जोर से। तो उस समय भी ये देखा गया था कि ये बहुत ही जो है उपद्रव करने वाला है। और ये भी आकाशवाणी हुई थी कि इसके 4 भुजाएं हैं और जो भी व्यक्ति इसको गोद में लेगा, जब इसके 2 भुजाएं गिरेंगे वही इसके मृत्यु के कारण बनेंगे। आप लोगों को कथा मालूम होगा। फिर आगे आप देखते हैं कि कृष्ण भगवान उसके चचेरे भाई थे। तो एक बार कृष्ण बलराम जी आए थे, उसके माँ ने क्या किया, शिशुपाल को कृष्ण के गोद में रख दिया। तो उसके 2 भुजाएं जो गल गए। तो उसको माँ को पता चला कि हाँ, ये कृष्ण ही मेरे पुत्र के मृत्यु के कारण बन सकते हैं। तो आप देखते हैं कि शिशुपाल प्रतिदिन कृष्ण भगवान को कितने गालियाँ देता था। आप लोगों को मालूम नहीं किसी को? हाँ, डेली 100 जो है वो कॉल फ्री, 100 कॉल फ्री यानी SMS, जो भी आजकल का आपका मोबाइल का ज़माना है। तो डेली शिशुपाल 100 गालियाँ देता था। लेकिन जब भी वो यज्ञ हो रहा था, जो युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो उसको याद ही नहीं रहा कि उसका कोटा ख़त्म हो गया है कि नहीं? हाँ, तो हम देखते हैं कि शिशुपाल एक ज्वलंत उदाहरण है। और इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं दीति और कश्यप, उनकी जो संतान, आप देखते हैं कि दीति ने जो गर्भधान किया था वो संध्या का समय था। ऐसे बताया जाता है कि शिवजी और उनके जो पार्षद उनके साथ घूमते हैं और ये अशुभ समय माना जाता है संध्या के समय, जब भी ऐसे सोना भी नहीं चाहिए संध्या के समय। तो आप देखते हैं कि कश्यप ने दीति को कहा कि तुम्हारे जो ये संतान जो उत्पन्न होगी, तो ये जो है ये असुर पैदा होंगे, राक्षस, और ये इस पूरा दुनिया का वो क्या करेंगे, इसको जो है लोगों का बिल्कुल जीना खराब कर देंगे। तो ये श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि दीति की जो संतान हुई, जो उनके पति ने जो कहा था कश्यप ने, वैसे ही हुआ। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। कंस, आप देखते हैं कि कंस का जन्म कैसे हुआ। तो उसमें भी एक कथा आती है कि एक जो है असुर था जिसका नाम था द्रुमिल। तो द्रुमिल जो है वो जो कंस के पिता कौन थे, किसी को मालूम है? उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी का नाम क्या था? हाँ, आप लोगों को मालूम नहीं? जो कृष्ण के बारे में, कृष्ण को बहुत ही ये करते थे, कृष्ण की निंदा करते थे। किसी को मालूम नहीं? कंस के माँ का नाम किसी को मालूम नहीं? प से नाम आता है। हाँ, पद्मावती।
चलो। हाँ, लेकिन ये कुछ दूसरी पद्मावती थी। हाँ, ऐसे बहुत सारे पद्मावती है। हाँ, जैसे नित्यानंद प्रभु के माँ का भी नाम पद्मावती था, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कंस है ये भी जो है ये क्या अवांछित संतान। तो आप देखते कि कंस भी जो है उसने भी बहुत सारे उपद्रव किए। अगर आप देखते कि एक तरफ से कुंती के द्वारा जो कर्ण का जो जन्म था ये भी अवांछित संतान के समान ही है, क्योंकि कुंती ने गलती से सूर्यदेव को ये किया था, वो मंत्र का उच्चारण किया था, और ऐसे भी कुंती ने कर्ण को गंगा जी में बहा दिया था। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप देखते हैं कि जो अवांछित संतान कैसे होती है जब भी संस्कार नहीं करते। तो इसलिए कलयुग में हम देखते हैं कि कलौ शूद्र संभव, मैंने 100% है ही, संभव है नहीं। तो शास्त्रों में क्या बताया जाता है कि जब भी एक व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है तो द्विज बनता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो इस प्रकार कलयुग में आप देखते हैं कि प्रभुपाद जी भगवद गीता के 7वें अध्याय के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि कलयुग के 99% लोग वो क्या है, शूद्री है। तो ऐसे जो सच्चाई है प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो जैसे भागवतम में एक जगह प्रभुपाद जी ने एक टीका लिखी है 3 स्कंद में 14वें अध्याय 38 नंबर इस श्लोक का जो तात्पर्य है उसमें अभी प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, आप लोग थोड़ा सुन लो। समाज में अच्छी संतान पाने के लिए जो शर्तें हैं कि पति धार्मिक तथा कर्मकांडीय नियमों में अनुशासित हो और पत्नी पति परायणा हो। भगवद गीता का श्लोक प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं 7वां अध्याय 11 नंबर श्लोक। किसी को मालूम है 7वां अध्याय 11 नंबर श्लोक? केवल धर्म के अनुसार ही जो है बच्चा पैदा कर, मैंने बच्चों को जन्म देना चाहिए, उसके बारे में श्लोक आता है कि कहा गया है कि धार्मिक नियमों के अनुसार संभोग कृष्ण भावनाओं का स्वरूप है। संभोग करने के पूर्व पति तथा पत्नी दोनों को अपनी मानसिक स्थिति, काल विशेष, पति निर्देश तथा देवताओं के प्रति आज्ञाकारिता पर विचार करना चाहिए। वैदिक समाज के अनुसार यौन जीवन के लिए उपयुक्त शुभ समय होता है जो गर्भाधारण का समय कहलाता है। दीति ने शास्त्रीय आदेश के सभी नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए शुभ संतान पाने के हेतु अति उत्सुक होने पर भी उसे यह बताया गया कि उसकी संतानें ब्राह्मण के पुत्र होने के योग्य नहीं होगी। रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे पुरुष वस्तुतः ब्राह्मणों से उत्पन्न थे, किंतु उन्हें ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इनके पिताओं ने उनके जन्म के लिए विधि विधानों का पालन नहीं किया था। ऐसी संतानें असुर या राक्षस कहलाती है। पूर्व काल में अनुशासन विधियों की लापरवाही से केवल 1 या 2 राक्षस थे, किंतु कलयुग में तो यौन जीवन पर कोई अनुशासन है ही नहीं। तब फिर कोई अच्छी संतान की आशा कैसे कर सकता है? निश्चित ही अवांछित संतानें समाज में सुख का स्रोत नहीं हो सकती, किंतु कृष्ण भावनाओं के माध्यम से ईश्वर के नाम का उच्चारण करने से वे मानव स्तर पर ऊपर उठ सकते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का पालन जो माध्यम के अनुसार अगर वो अपना जीवन व्यतीत करता है, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि हमने ये जो संस्था बनाई है इसमें हमने 4 नियम रखे हैं। अगर एक व्यक्ति इन 4 नियमों का पालन करता है, आप लोग जानते हैं 4 नियम, तो एक व्यक्ति मनुष्य के स्तर पर आएगा। नहीं तो वो क्या है, कौन से स्तर पर है? पशु के स्तर पर है। तो आज भौतिक जगत में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो धर्मों का जो है वो पालन नहीं करते, शास्त्रों का जो है जो शास्त्रों में लिखा है उसका पालन नहीं करते।
तो आज अभी हम देखते हैं कि आज जो है अर्जुन के द्वारा दो चीज़ अर्जुन यहाँ बता रहे इस श्लोक में। वो क्या बता रहे? इस श्लोक में अर्जुन जो है वो क्या बता रहे? समक्ष कुल विनाश से होने वाले 5 यानी 6 अर्जुन ने ये बताए हैं कुल नाश के कारण। तो आज इसमें 2, पहले आप लोगों ने 4 सुना होगा, उसको फिर से हम दोहराएंगे। तो यहाँ अर्जुन जो है 5वां और 6ठा जो है, जो ये है क्रम है, उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि ये 6 क्या क्या है। वो है, पहला है कुल विनाश से कुल धर्म नष्ट हो जाता है। कुल के नाश होने से जो कुल धर्म है ये नाश हो जाता है। फिर दूसरा, कुल धर्म के नष्ट होने से कुल में अधर्म फैलता है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, अधर्म फैलने से कुल की स्त्रियां दूषित होती है, ठीक है। चौथा, स्त्रियों के दूषित होने से अवांछित संतान उत्पन्न होती है। तो आज अभी 5वां और 6ठा पॉइंट क्या चल रहा है आज के श्लोक में? अवांछित संतानों की वृद्धि से कुल घातियों तथा कुल के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। और 6ठा पॉइंट है, इस प्रकार कुल के पितरों की पिंड क्रिया तथा जल क्रिया समाप्त होने से उनका पतन हो जाता है। तो यहाँ जो अर्जुन जो बता रहे 2 जो महत्वपूर्ण आज जो अर्जुन के द्वारा जो बताया जो पॉइंट है वो है अवांछित संतानों की वृद्धि से कुल घातियों तथा कुल के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। और इस प्रकार कुल के पितरों की पिंड क्रिया तथा जल क्रिया समाप्त होने से उनका पतन हो जाता है। जैसे आपके घर में समझो पौधे हैं, ठीक है, अगर आप उसको पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? वो धीरे धीरे, अभी खास करके गर्मी के सीज़न में वो अपना जान छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं कि यहाँ जो पॉइंट बताया गया है, तो भगवद गीता में भी 16वें अध्याय में दैवी और असुर ये लक्षणों के अंतर्गत कृष्ण भगवान ने एक बहुत ही एक शास्त्रीय पॉइंट बताया है। तो यहाँ उसमें भगवान बताते हैं 16वें अध्याय में एक श्लोक आता है, श्लोक क्रमांक 23। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकार्तः न स संसिद्धिम नाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो भगवान क्या बताते हैं? जो शास्त्रों के आदेशों का अवहेलना करते हैं और मन माने ढंग से कार्य करते हैं, वैसे न तो सिद्धि प्राप्त करते हैं, न सुख प्राप्त करते हैं, न ही परम गति की उनको प्राप्ति होती है। तो आज हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दो पॉइंट जो अर्जुन के द्वारा जो यहाँ बताए गए हैं। तो अर्जुन बताते हैं कुल के नष्ट होने से कुल के वयोवृद्धों के द्वारा दिए गए आदेशों के अभाव में अथवा अपने मनमाने आचरण के कारण अवांछित संतानों ने पितरों की पिंड व जल क्रिया नहीं करती। तो फिर दूसरा जो है, स्त्रियों के दूषित होने के कारण व्यभिचार से उत्पन्न अवांछित पुत्रों के द्वारा संपन्न की हुई पिंड व जल क्रिया को पितरगण स्वीकार नहीं करते। इस कारण जो है बताया जाता है, इस प्रकार की स्थिति में अर्जुन की चिंता है कि पितरगण गिर जाएंगे। तो यहाँ जो है हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर वो शुद्ध नहीं है, जैसे हम भगवान के लिए जो भोग वगैरह बनाते हैं, तो अगर शुद्धता नहीं है तो उसमें एक दोष निर्माण हो जाता है। तो यहाँ अर्जुन भी ये बता रहे हैं कि जब भी ये जो भी वो क्रिया करेंगे अगर वो शुद्ध नहीं होंगे तो हमारे जो पितृगण है उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे और इसके अंतर्गत क्या होगा कि उनका पतन होगा। तो शास्त्रों में जो है हम देखते हैं कि जैसे हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने प्रेम भक्ति चंद्रिका में एक श्लोक लिखा है, खास करके संतानों के प्रति। हर एक व्यक्ति भौतिक जगत में एक पुत्र की कामना करता है। पुत्रहीनम गृहम अंधकूपम, ऐसे कहते हैं। जैसे चित्रकेतु महाराज थे, हाँ, किसी को मालूम है चित्रकेतु की कितनी पत्नियां थी? 1 करोड़। अरे वाह। हाँ,
हाँ, कि कृष्ण भगवान का तो केवल 16,108, हाँ, लेकिन इसके 1 करोड़ पत्नियां थी, फिर भी उसको एक भी पुत्र नहीं था। अभी आप देखते हैं कि हमारा जो भाग्य है तो ही पुत्र मिलेगा। तो शास्त्रों में उल्लेख आता है कि एक व्यक्ति के बहुत सारे जब भी पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाके एक व्यक्ति को पुत्र जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो धृतराष्ट्र ने भी प्रश्न किया था, जब भी ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए थे और जब भी पांडव लौट के आए, उनके साथ कृष्ण भगवान थे, तो धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से ऐसे एक प्रश्न किया कि मेरे जीवन में ऐसी ये घटना हुई, कोई पिता नहीं चाहता कि उनके उसके जो है बच्चे उनके पहले मरे। ऐसे बताया जाता है कि जो भी पिता माता है, अगर उनकी संतान उनसे पहले अगर गुजर जाती है तो इसका अर्थ है कि उन्होंने अपने गत जन्म में बहुत ही बड़ा घोर पाप किया होगा। तो इसी प्रकार धृतराष्ट्र ने एक जिज्ञासा किया था कि ऐसे मैंने कौन सा पाप कर्म किया था जिसके फल स्वरूप मुझे मेरे इस जीवन में मेरे पुत्र मुझसे पहले ही मर गए, मुझे वो लोग पिंडदान दे नहीं सकते। तो कृष्ण भगवान त्रिकालदर्शी है। तो गीता में भगवान बताते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो भगवान बताते हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में जो भी हुआ है तो भगवान सब जानते हैं। भगवान के पास सबका रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जैसे यमराज जी रिकॉर्ड रखते हैं, तो कृष्ण भगवान ने जो है धृतराष्ट्र से कहा कि 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे और एक बार आप जंगल गए थे और आपने जलता हुआ एक अग्नि का जाल वो चिड़ियों के 100 छोटे बच्चों के ऊपर डाल दिया था और वो बच्चे जो है अग्नि से वो जल के मर गए। जब भी उनके माता पिता उनको छुड़ाने आए थे, उस अग्नि से उनके आँख फट गए। ज़्यादा अग्नि का ये ज्वाला के कारण उनके आँख फट गए थे, वो अंधे हो गए थे। तो उसी का जो है आपको इस जन्म में फल स्वरूप उसको आपने जो कर्म किया था उसका आपको प्रतिफल वो आपको इस जन्म में मिल रहा है। तो धृतराष्ट्र ने पूछा, अरे आप बताओ ये 50 जन्म मुझे क्यों इंतज़ार करना पड़ा, मुझे अगले जन्म में उसका पाप का कर्म, जैसे एक कर्म होता है त्वरित कर्म, त्वरित यानी जैसे समझो, जैसे कहते हैं ना, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, है कि नहीं। एक जैसे कभी कभी एक्सीडेंट 1 सेकंड में हो जाता है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझे अगले जन्म में क्यों उसका ये नहीं मिला, फल नहीं क्यों नहीं मिला। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि एक पुत्र की भी प्राप्ति करनी हो तो बहुत सारा आपको पुण्य अर्जित करना होता है। जैसे समझो अगर किसी को एक बढ़िया कार खरीदनी है, आजकल तो करोड़ों में रेट है, अगर मारुति कार 3-4 लाख में मिल जाएगी, ठीक है, उससे बढ़िया कोई हुंडई की मिल जाएगी, उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा है जो भी है। हाँ, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान ने उनको कहा कि आपको 100 पुत्र का पुण्य अर्जित करने के लिए 50 जन्म लगे। समझ में आ रहा है ना। हाँ, पहले ज़माने में लोग जो है एक मिट्टी के हंडी में पैसा इकट्ठा करते थे। चलो हमें याद है बचपन में। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र को भगवान ने कहा कि 50 जन्मों के बाद अभी आपका इतना पुण्य अर्जित हुआ कि आपको 100 पुत्र प्राप्त हुए, और क्योंकि आपने 100 जो है चिड़ियों के जो है बच्चों को ये किया था, तो उसका आप जो क्या कर रहे हैं, उस पाप का आपको क्या मिल रहा है, उसका जो भी उसका रिएक्शन प्रतिफल आपको जो है मिल रहा है। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान बताते हैं, कर्मणा गहनो गति। कर्म क्या है, कर्म अकर्म विकर्म ये समझना इतना आसान नहीं है। तो भगवान बताते हैं कि ये बहुत ही यानी सूक्ष्म है, तो हमें इसमें इतना ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा था कि नरोत्तम दास ठाकुर वो लिखते हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका में, वो बताते हैं, देवलोक पितृलोक पाए तार महाशुक, साधु साधु बले अनुक्षण, जुगल भजन जार प्रेमानंदे भास तार, त्रिभुवनंतरे नाचिनी। तो बता रहे कि अगर किसी के घर में एक वैष्णव
जन्म लेता है या किसी के घर में एक व्यक्ति वैष्णव बन जाता है, कृष्ण भक्ति में आ जाता है, तो बताते हैं कि जो पितर लोग हैं, जो आर्यमा यमराज जी के जो नरक है, 28 प्रकार के नरक होते हैं, एक नरक है वो पितृलोक में ही है, यानी यमराज जी के पास ही होता है नीचे। तो वहाँ हमारे पितर लोग जो है वो वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं रेलवे में एक वेट लिस्ट होता है कि नहीं, हाँ, RAC में आ जाता है, फिर कहीं कन्फर्मेशन में वो आ जाता है। तो वहाँ हमारे पितर लोगों को वहाँ रखा जाता है, उनके जो भी पाप कर्म के लिए उनको वहाँ वेट लिस्टेड वहाँ रखा जाता है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जब भी एक व्यक्ति कृष्ण भगवान की भक्ति में लग जाता है तो सारे देवता, हमारे पूर्वज, वो बड़े उत्साहित हो जाते हैं और वो क्या कहते हैं कि अरे बहुत अच्छा हुआ कि हमारे परिवार में एक वैष्णव का जन्म हुआ और शीघ्र ही हमारी जमानत जानते हैं, कभी कभी कोर्ट में जाना होता है, अगर कोई किसी को पुलिस पकड़ के ले जाता है तो उसकी जमानत देनी पड़ती है कि नहीं, बहुत पैसा भरना पड़ता है। तो वहाँ भी हम देखते हैं कि जब भी हम लोग ये पिंडदान जलदान करते हैं पितृपक्ष में, तब जाके हमारे पितरों का वहाँ से उनको मुक्ति मिलती है। तो वो लिखते हैं, नित्यंती पितर सर्वे नृत्यंती च पितामह मद वंशे वैष्णव जात स में त्राता भविष्यति। तो ये एक श्लोक आता है शास्त्रों में कि हमारे परिवार में एक वैष्णव का जन्म हुआ और इसके कारण नृत्यंती पितर, हमारे जो पितर लोग हैं वो अभी कहते हैं कि चलो बहुत अच्छा हुआ, अभी वो क्या करेंगे, हमें आगे यहाँ से नरक से वो निकाल देंगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पुत्रार्थे क्रियते भार्या पुत्र पिंड प्रयोजनम। एक श्लोक प्रभुपाद जी एक जगह एक लेक्चर में प्रभुपाद जी बताते हैं, पुत्रार्थे क्रियाते भार्या पुत्र पिंड प्रयोजनम। इसको वो बताते हैं कि ये हम जो शादी करते हैं, खास करके पुत्र प्राप्त करने के लिए, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैदिक शास्त्र के अनुसार जो शादी जो हम करते हैं वो एक पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पुत्र हमें क्या करेगा, नरक से, अगर हम ऐसे नहीं कि हर एक व्यक्ति नरक में जाता है, अगर एक व्यक्ति चला भी गया तो कम से कम उसका पुत्र उसको नरक से जो है वो मुक्त कर सकता है। आप देखते हैं कि जब भी नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो नरसिंहदेव भगवान ने प्रहलाद महाराज से कहा, अरे कुछ आशीर्वाद मांगो। तो आप देखते हैं कि प्रहलाद महाराज ने कुछ आशीर्वाद मांगा ही नहीं, लेकिन केवल प्रहलाद महाराज ने एक ही भगवान से कहा, बस मेरे पिताजी को आप मुक्त कर दो। समझ में आ रहे कि नहीं? प्रहलाद महाराज ने केवल भगवान से एक ही वचन मांगा था कि आप मेरे पिताजी को मुक्त कर दो। तो आप देखते हैं कि नरसिंहदेव भगवान ने कहा, आप भक्त बने तो उनकी तो मुक्ति निश्चित है, क्योंकि आप भक्त हैं, इसके कारण उनकी मुक्ति निश्चित है। तो आप देखते हैं कि कहीं शास्त्रों में 14 पीढ़ियों का उल्लेख आता है, कहीं 21 पीढ़ियों का उल्लेख आता है, जो भी है। तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं तो उनके जितने भी जो है, हमें इसके प्रति ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए कि मेरा श्राद्ध कौन करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, तो अभी उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो आज भी उनका एक पिंडदान क्रिया होता है वहाँ। उनका नाम वासुदेव दत्त, नहीं वासुदेव घोष, ऐसे कुछ नाम है, वासुदेव घोष। तो एक अंतरद्वीप करके है पश्चिम बंगाल में, नवद्वीप में, वहाँ आज भी एक लीला होती है कि एक ऐसी कथा आती है कि ये जो वासुदेव जो थे, उनका एक पुत्र था, वो बचपन में गुजर गया, 5 साल का था। उनके घर में विग्रह थे, गोपीनाथ जी का विग्रह था, वो भगवान की पूजा करते थे। तो जब भी भगवान को भोग लगाते थे तो गर्मी के दिनों में भगवान को पंखा करते थे। तो एक दिन उनके मन में ऐसे विचार आया, अभी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तो अभी मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, लेकिन मृत्यु के पश्चात मुझे मेरा पिंडदान या मुझे पिंडदान जलदान कौन करेगा।
तो ऐसे मन ही मन वो सोच रहे थे, अभी भगवान अंतर्यामी है, जानते कि किसके मन में क्या चल रहा है। तो भगवान ने कहा, अरे मैं तो आप तो मुझे मेरी पुत्र के समान सेवा करते हैं, मैं हूं ना। भगवान ने कहा, मैं हूं, आप क्यों चिंता करते हो। तो आज भी वहाँ आप कभी जाएंगे मायापुर, आप अंतरद्वीप जा सकते हैं। तो वहाँ जिस दिन ये उनका पिंडदान होता है, तो भगवान के विग्रह सफ़ेद कपड़े डाल के जो भगवान जो है वो उनके घर जाते हैं वो पिंडदान क्रिया करने के लिए। तो जगन्नाथ जी की जो लीलाएं हैं, तो जगन्नाथ जी के लीला के अंतर्गत भी एक ऐसी लीला है, वो पितृपक्ष के समय जगन्नाथ जी भी जो है वो पिंडदान करते हैं। जगन्नाथ भगवान जो है वो भी पिंडदान करते हैं। वसुदेव और देवकी का एक लीला है, एक लीला है। ये जगन्नाथपुरी में ये लीला का आयोजन होता है कि कृष्ण भगवान जो है वो वसुदेव और देवकी का जो है वो पिंडदान करते हैं। आप देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी जब उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्रा का देहांत हुआ था, तो वो उनके पिताजी का पिंडदान करने के लिए गए थे। वहाँ ईश्वरपुरी से उनकी मुलाकात हुई थी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, पूनामनो नरकाद यस्माद त्रायते इति पुत्रः। पूनामनो नरकाद यस्माद त्रायते इति पुत्र का मतलब है कि पू नाम का एक नरक है, ठीक है। तो वहाँ से जो हमें मुक्त करने वाला है उसको पुत्र कहते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, पुत्र और मूत्र एक ही जगह से निकलते हैं। अगर एक पुत्र अपने पिताजी के आज्ञाकारी नहीं है, अगर वो शास्त्रों का पालन नहीं करता है, वो एक मूत्र के समान ही प्रभुपाद जी बताते हैं। तो इस प्रकार एक जगह प्रभुपाद जी बताते हैं, पुत्र पिंड प्रयोजनम। पुत्र जो है वो हम एक व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है वो खास करके पिंडदान करने के लिए। तो जैसे मैं बता रहा था कि पितृपक्ष ये कार्तिक के 15 दिन पहले आता है, ठीक है। तो अपने पूर्वजों की आत्मिक संतुष्टि व शांति और मृत्यु के बाद उनकी निर्बाध अनंत यात्रा के लिए पूर्ण श्रद्धा से अर्पित कामना, प्रार्थना, कर्म और प्रयास, इसको श्रद्धा कहा जाता है। तो यहाँ आप देखते हैं कि प्रभुपाद जी जो है एक बहुत ही सुंदर श्लोक को प्रभुपाद जी ने कोट किया है। वो जो है जो श्लोक आता है, यथा तरोर मूल निश्चंचेन। तो आप देखते हैं कि जैसे, नहीं ये दूसरा श्लोक है जो प्रभुपाद जी जो कोट करते हैं, वो श्रीमद् भागवतम का जो है वो 11वें स्कंद से है। देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितृणाम नायम किंकिरो न च ऋणी च राजन सर्वात्मय शरणम गतो मुकुंद परिहर्त कर्तुम। तो ऐसे बताया जाता है कि हमारे 6 प्रकार के ऋण होते हैं। कितने प्रकार के? तो यहाँ बताए गए हैं कि ये 6 प्रकार के ऋण क्या क्या है देख लो। देव ऋण, देवताओं के द्वारा मुनियों के लिए, फिर सामान्य जीवों के लिए, फिर स्वजनों के लिए, मनुष्यों के लिए और पितरों के प्रति। तो ये 6 ऋण हमारे लिए लागू होते हैं। लेकिन अगर मुकुंद भगवान, अगर कृष्ण भगवान का हमने शरण लिया है, तो चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक श्लोक लिखते हैं, श्रद्धा शब्द, ये श्राद्ध अलग है, श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो हमारे एक आचार्य थे श्रीधर स्वामी, उसका भी हम लोग टीका कभी कभी बताते हैं गीता में। तो श्रीधर स्वामी, उनके जीवन में भी एक ऐसे एक घटना है। तो उनका जीवन का समय तो हो गया था, काफ़ी समय हो गया था। तो उनकी पत्नी गर्भवती थी। तो सोच रहे थे कि अभी मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे पत्नी को कौन देखभाल करेगा, बच्चे का कौन देखभाल करेगा। तो भौतिक जगत में तो एक चिंता तो बनी रहती है लोगों को। तो क्या हो गया, जहाँ वो बैठ के ऐसे चिंता में बैठे थे, तो एक छिपकली का अंडा नीचे गिर गया और देख रहे थे। देखते देखते उसमें से एक छोटा सा छिपकली का बच्चा बाहर आ गया और पता नहीं भगवान के दैवी इससे वहाँ एक बिल्कुल एक छोटा सा कीड़ा आ गया उसी वक्त। तो उस बच्चे ने मुंह बाहर करके बस अपना पहला भोजन कर लिया। तो उससे उनको एक ऐसे यकीन हुआ
कि चलो भगवान सब कुछ करने वाले हैं, तो उस विश्वास से उन्होंने अपना घर त्याग दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो 6 ऋण बताए हैं देवताओं के प्रति, तो हम देखते हैं कि देवता हमें क्या दे रहे हैं, सूर्य हमें प्रकाश दे रहे हैं। कितने लोग हैं सूर्य नारायण को जल दान करते हैं? हाँ चलो गिने चुने 2-4 लोग हैं चलो ऐसे नहीं कि ये कोई जरूरी नहीं सबको करना है। हाँ, सूर्य हमें 12 घंटा लाइट दे रहे हैं कि नहीं? हाँ, फिर इंद्र हमें क्या दे रहे हैं? वर्षा दे रहे हैं। भूमि हमें क्या दे रही है? अनाज दे रही है। तो ये है देवताओं के प्रति। आप लोग हवा लेते हैं कि डेली सांस लेते हैं? हाँ, हम लोग डेली कितना हवा पान करते हैं किसी को मालूम है? लीटर के हिसाब से कितना लीटर आप लोगों को मालूम नहीं? आप लोग केवल हवा ले रहे हैं। हाँ, कितना लीटर आप लोग हवा डेली लेते हैं? मालूम ही नहीं, कोई पड़ी नहीं, क्या जरूरी है कि नहीं? बस। और रात को आप जब सो जाते हैं कोई ना कोई आपका सांस चला रहा है। अगर अगर अपना सांस चलाना होता तो कितना गड़बड़ होता है कि नहीं? पता नहीं अगले दिन कितने लोग जिंदा वो रह जाते हैं। जैसे कोई ड्राइविंग करता है, अगर झपकी आ जाती है तो बस सब गड़बड़ हो जाता है। तो एटलीस्ट भगवान ने ये हमारा जो हार्ट है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वो ही चला रहे, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो एक तो देवताओं का ऋण है, फिर ऋषियों का ऋण है। ऋषि मुनि उन्होंने हमें सारे ग्रंथ दिए हैं। फिर समाज में हम देखते हैं बहुत सारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो इनके प्रति भी हमारा ऋण होता है। हमारे टीचर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे समाज में बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो भी हमारे प्रति, जैसे कुत्ता घर का रखवाली करता है, गाय हमें दूध देती है। हम लोग जो है ये मधुमक्खियों का मधु भी वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार जो है हमें जड़ी बूटियों से भी बहुत सारा ये मिलता है, औषधियाँ मिलती हैं। तो फिर हमारे जो पितृगण हैं, ऐसे ये 6 ऋण बताए गए हैं। तो जब भी हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो हम ये जितने भी ऋण है उससे मुक्त हो जाते हैं। तो भागवतम में 4 स्कंद में एक श्लोक आता है, यथा तरोर मूल निश्चिंचेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपराचात यथेन्द्रियानाम तथैव सर्वहरणम अच्युतेज। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार हम पेड़ के जड़ों में जल अर्पण करते हैं तो उससे क्या होता है कि पेड़ की जो टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं और उसके फल फूल है, उनको ताकत मिल जाती है। जैसे हम लोग भोजन अपने इंद्रियों को हाथ से हम नहीं खा सकते, पैर से नहीं खा सकते, कान से, आँख से, तो भोजन तो मुंह में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जब भी हम कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति करते हैं तो जितने भी देवता हैं वो क्योंकि भगवान के अंग हैं वो भी तृप्त हो जाते हैं। ये हमें मालूम होना जरूरी है। तो समय की कमी है, तो जैसे पद्म पुराण में भी एक कथा आती है, आप लोगों ने आत्मदेव की कथा सुनी होगी। जो भी भागवतकार भागवत कथा करते हैं, आत्मदेव जो है एक दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण थे, उनकी भी कथा आती है। तो वो भी जो है उनके पास भी पुत्र नहीं था, तो उनकी पत्नी धुंधली, उन्होंने एक बार जाके एक ब्राह्मण से फल लेके आए, पत्नी को दिया। उसने सोचा यार कौन गर्भवती बनेगा, इससे अच्छा है कि चलो, उसने वो फल को जो है किसको खिला दिया। हाँ, आप लोगों को ये कथा मालूम है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन वो गाय को खिलाया तो बच्चा जो गाय से भी एक लड़का ही पैदा हुआ, उसका नाम हो गया गोकर्ण। लेकिन इसकी जो बहन थी तो उसका पुत्र, उसने पति को बताया कि ये लड़का है जो है, वो उसका नाम क्या था, जो बहुत सारा पाप कार्य कर रहा था, धुंधुकारी। हाँ हाँ, तो उसने ऐसे बताया था कि वो अपने माँ बाप को घर से भगा दिया, फिर वो वेश्या को ला के घर में रखता था। देखो अवांछित संतान से क्या होता है। तो वेश्याओं ने क्या किया, उसको मुंह में आग डाल के उसको जिंदा मार डाला। तो वेश्या उसका धन लेके चली गई। फिर जब वो प्रेत योनि में था तो उसने फिर क्या किया, जो है गोकर्ण से अनुरोध किया कि भाई मैं अभी ये प्रेत योनि में हूँ, आप मेरा उद्धार करो। तो ऐसे पुराणों में बहुत सारे कथाएं हैं जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति को जो है
ये अलग अलग जो है अवांछित संतान है। जैसे भागवतम में राजा, एक राजा थे, क्या उसका नाम था, वो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मारता था, राजा वेण। राजा वेण किसका पुत्र था? राजा अंग। अभी ये कहानी बताने का समय नहीं है। तो राजा अंग इतने परेशान हो गए वो पुत्र के यानी बुरे कार्यों से, उन्होंने अपना घर ही त्याग दिया। जब उनकी पत्नी सो रही थी, उन्होंने अपना घर त्याग दिया। उन्होंने कहा अरे ये इतना बेकार पुत्र है, इससे अच्छा है कि हम अपना घर त्याग देते हैं। तो भौतिक जगत में हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हमारी जो संतान है, हाँ, अगर हमने उनको ये संस्कारों के अनुसार उनको प्राप्त नहीं किया है, तो उसका हमें बहुत बड़ा दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो समय बिल्कुल हो गया, प्रभु जी आ गए, तो अभी अंग्रेजी क्लास होगा। अगर किसी को कोई संक्षिप्त में कोई एक प्रश्न है तो कर सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट बचे हैं। किसी को कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है? अभी आज मैं पूरा क्लास पूरा कर नहीं पाया, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण। पुत्र मित्र नहीं, मूत्र बताया था। मूत्र का मतलब है जो हम पेशाब करते हैं, हाँ, वो एक ही द्वार से निकलता है। तो एक अगर पुत्र वो माता पिता के कहने का अनुसार नहीं चलता है, तो उसको, जैसे दुर्योधन, हमने दुर्योधन का उदाहरण दिया था, तो हालांकि नाम के लिए पुत्र है, लेकिन वो मूत्र के समान ही है। तो और कोई किसी को? हाँ जी। हाँ, पिंडदान वगैरह, हाँ। नहीं नहीं, अभी आजकल मैंने बताया ना, ये कर्म जो है, कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, इसको हम समझ नहीं पाएंगे। अगर आपने भक्ति किया है, अच्छी तरह आपने भक्ति की है, तो आपके लिए पिंडदान की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भगवान देख लेंगे, ठीक है। तो ये है कि नहीं कि हर एक का ही पिंडदान होना चाहिए। तो मैंने बताया कि जो अगर हम भक्ति में लगे हैं तो भगवान ठाकुर जी देख लेंगे, ठीक है। इसलिए एक श्लोक मैंने बताया था, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। इसका मतलब है कि आपका सब कुछ ठाकुर जी है वो संभाल लेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, भगवद गीता की। हरे कृष्ण। साउंड सिस्टम बड़ा खतरनाक है। Yes, okay.
Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Balaba Grivarada Hari Jaya Gopijana Balaba Grivarada Hari Jaya Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Yamuna Tira Banachari Yamuna Jayora Damadaba Kunja Bihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Balaba Grivarada Hari Jaya Gopijana Balaba Grivarada Hari Jaya Yasodanandana Bhajajana Ranjana Yasodanandana Bhajajana Ranjana Yasoda Yamuna Tira Banachari Yamuna Yamuna Tira Banachari Yamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitago Haribo, 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 Nitago Haribo. Nitaigo Haribo, 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 Nitago Haribo. Dam Vishpa Paravansa Parivrikracharya Stutra Sadasya Srimad Esi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jaya Vishnupa Paramahansa Parivrikracharya Stutra Sadasya Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Pramsikausi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Go Bhaktivinoda Ki Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Vrindavan Dham Ki Mayapur Dham Ki Dwarka Dham Ki Jagannath Dham Ki Ganga Maya Ki Yamuna Maya Ki Tosi Devi Bhakti Devi Ki Sri Nitya Gaurachandra Ki Sri Krishna Balaram Ki Ishwara Samasunda Ki Aina Sakitam Ki Srila Prabhupada Ki Nitya Gopimanandi. All glory to the summer devotees, all glory to the summer devotees, all glory to the summer devotees, all glory to the lotus feet of Sri Sri Guru Gauranga. Om Jnana Chimandasya Jnanangana Salakaya Chaksusu Umiltan Yena Tasma Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapita Yena Bhutale Swarupa Kadamanya Dadati Swapadantikam Vande Ham Sri Guru Siyutam Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupa Sakajata Sahagana Lalita Raghunatha Sajiva Sadita Savajduta Parijana Sata Sri Krishna Chita Devan Sri Radha Krishna Padasa Gana Lalita Sri Vishakavitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kantu Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gorange Radha Brindamaniswari Vishabhanu Sutta Devi Panamami Haripriye
Panchakapaturubhyascha kripasindhiveva cha patitana pavanavebhyo vaishnavebhyo namo namo. Namo Vishnupadaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Guratu Cinema. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Siva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Anandalila Maya Vigrayo Emavada Vichavi Sundarayo Tasma Maha Premarasa Pradayo Chaitanya Chandrayo Namana Mastute Chaitanya Chandraya Namana Manasute. So I thank everyone for coming this evening for the Bhagavad Gita class. Now the Hindi part just finished. Now the Angriji part, English part. Angriji, Hindi and then Angriji. So which means the Krishna Balaram temple, our temple here is always, there's always ongoing Krishna Katha. Actually our temple is meant for that only. Our temple is meant for education. It's meant for giving spiritual education. Otherwise, it's not that people just come to have the darshan and then they take pictures and then they go away. The temple is not meant for that. The temple is not meant for your photo-taking opportunities. The temple is meant to have a darshan and to hear about the teachings of Lord Krishna, to hear Bhagavad Gita, to hear Bhagavatam, here for the sake of, you have to hear from the right sources. If you hear from unauthorized sources, then you will have problems. You will not understand anything. So which means hearing must be from the authorized sources to hear, which means qualified person. Just like if you go to university, college, for all your studies, all your particular subject, you hear only from competent person. The person who is teaching you is very competent. Is specialized in the field. Because by such listening to the teaching, then you can be, then you can become learned in your particular field, and then you can get your degree, and then you can use that degree to, for your life endeavors. So similarly, also the hearing must be from right sources. We have to hear the message of Krishna from an authorized representative of Krishna. Krishna's message must be heard directly. Then, if you hear directly, then it's become possible to render service to Krishna. Because we are meant to render devotional service to Krishna. But how can we render service to Krishna if we don't hear properly? So this is what is in the Bhagavad Gita, especially what Lord Krishna is talking about today in today's text. What the Lord is talking about. So let's read today's text, and then I will do some deliberation on that. This is Bhagavad Gita, chapter 3, text number 32. So Lord Krishna is continue his instruction of Arjuna. So let's see. Hold on, what happened? Kama Yoga. Okay. Kama Yoga section. Yetu etan abyasu yanto nano tishtanti me matam sabe jnana vimudamstam vidi nashtam chetasaha
Ye tuetan abhyasuyanto nanotishtanti me matam sabhagyana vimodastam vidi nashtam achetasaha. Ye tuetan abhyasuyanto nanotishtanti me matam sabhagyana vimodastam vidi nashtam achetasaha. Mataji's, ladies. Yea, those two, however, etat this abhyasuyantaha out of envy. Now, do not anotishtanti regularly perform me, my, mama, matam, injunction, sabhagyana, in all sorts of knowledge, vimodam, perfectly befooled, tan, they are, vidi, know it well, nashtam, all ruined, achetasaha, without Krishna consciousness. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada ki. But those who out of envy disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. Purport. The flaw of not being Krishna conscious is clearly stated herein. As there is punishment for disobedience to the order of the Supreme Executive Head, so there is certainly punishment for disobedience to the order of the Supreme Personality of Godhead. A disobedient person, however great he may be, is ignorant of his own self
and of the Supreme Brahman, Paramatman, and the personality of Godhead, due to a vacant heart. Therefore, there is no hope of perfection of life for him. Yetueta abyanti abyasuyanto nanustanti me matam sabagyana vimodanstans vidi nashtan nachetasa. So the Supreme Lord is saying, Lord Sri Krishna is instructing his dear devotee Arjuna, but telling him that those who out of envy disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. So the Lord has been giving lots of knowledge, especially in respect to Kama Yoga. Now, when we say Kama Yoga, Kama Yoga means Niskam Karma, which means desireless activities. Desireless activities. That is Niskam Yoga, Niskam Karma, because of course, in this material world, all the activities that we are performing, it's all with fruits, because we want some fruits. So therefore, we are performing activities. No activities in this world is done without expectation of something. Everything is done because of some expectation. But when the word yoga is added to it, it means activity is performed, but it's activities performed for the purpose of pleasing, satisfying the Supreme Lord. Which means all the results of one's activities are given unto him, unto God, unto Krishna. Like in the early verses in this chapter, the Lord said, Kamani evadikarastes, mafale sukadachanan. The Lord saying that, he said, Kamani evadi, he said that you have a right to perform your duty, you have to perform your duty, but the fruit of your duty should not be enjoyed by you, which means do not think yourself to be the enjoyer of the fruit of your activities. I'm Krishna, I'm the enjoyer of the activities, not you. This is what Krishna is telling Arjuna, so that I'm the enjoyer, not you. You are performing your activities only. You perform your activities, and such activities will not bind you to this material world. Because everything you are doing binds you to the material world. How's it binding you? Because whatever action you perform, you will get a corresponding reaction. That's the reality. Any action you perform, you will get a corresponding reaction to it. Nothing is, as we said in the earlier class, that nothing in this world is accident, because everyone is enjoying or suffering the results of their actions, of their previous actions. So it's all there. You have some actions which are already bearing fruit now, and then there are some actions which are there as seed. It's called Kama Beach, as seed. So all those actions are there, but the acharyas are saying, actually by the engagement in devotional service of Krishna, because devotional service of Krishna means activities which are done for the pleasure of the Supreme Lord. That is devotional service to Krishna. It's called Bhakti Yoga. The activity is done for the pleasure of Krishna, and because one is not trying to enjoy the result of such activities, then one is free from the result of such activities. One is free from results.
So here, in this chapter here, Lord Krishna, he has been giving this instruction to Arjuna. But there are those persons, entities, who, despite hearing these instructions, still they don't believe in it. They may hear it, they hear these instructions, but to them, it doesn't mean anything to them. It does not mean anything to them, which means they may be sitting down in a Bhagavad Gita class, but they don't take it serious. They say, what is this? What is this talk? They don't take it serious. So therefore, the Lord says that why they don't take serious the message of the Gita, this is due to envy, because they envy the Lord himself. He says that Icha Dvesh Samutena Dvada Mohena Bharata. Icha Dvesh. Icha means in this material world, there are two. Icha means the desire, and then duality. Dvesh means duality. So that's why we're in the material world. We all overcome by desire and also the duality, dvesh. So desire for what? Desire to be the enjoyer. Desire to enjoy everything. That's why we are in the material world. So Icha is there, and then there is a dveshti, which means the duality. Because this is the world of duality. World of duality means everything is good and bad. Everything there's always something, and there's always the opposite of that. So we live in the world of duality. So because everyone is overcome by this duality and also the desire, the each other said, And then the Lord says, what is it? What is that? Sava Bhutan. Yeah. Sava Bhutan is Samoham. So every living entity is overcome by illusion of these two things. Sava Bhutan is Samoham. So everyone is overcome by this illusion of trying to be the enjoyer, trying to enjoy, and overcome all the dualities in the sense that you see someone as your friend or you see someone as your enemy. That's duality. Some group of people are your friends, and some people group of people are your enemy. The whole material world is like that. That's how everyone live in the material world. Some you see as your enemy, and some you see as your friend. Is it? Whereas a pure devotee of Krishna is what? Is Samohan Savabhuteshu. A Krishna devotee is Samohan Savabhuteshu. He sees the equality of all living entity. Someone who has become Krishna conscious, he sees the equality of all. Sama. Sama means equal. He does not see anyone as friend or enemy, because he sees the spirituality in everyone. Everyone is connected with God. Everyone is connected with Krishna. So therefore, a Krishna devotee, a Krishna conscious person, does not see duality in this world. He doesn't see someone as favorable or someone as unfavorable. Because he sees Krishna as everyone. He sees the Lord in everyone. Vidya Vinasampani Brahmani Gavyashtini Sumi Sunichave Sapakicha Panita Samadashina. Samadashima Samadat Samata, equality. He sees equality. Either an elephant culture, a chandala, a dog eater, brahmana, whatever it is. He sees the quality on everyone because he only sees the soul, the spirit that is there. Because without the presence of the soul, and the soul is an energy of the Supreme Lord. So without the presence of the soul in any matter, then there will be no life. The life is there when the soul is present in the matter. Otherwise, there's no life.
A body is there, but the moment the soul leaves the body fall down, dead. We say, oh, this body is dead, this body is dead. And we make arrangements to cremate the body. But we said the body is dead because the soul leaves the body. And that soul we've never seen before. We've never seen the soul. Because we are covered by illusion. But we are thinking, this is my relative, this is my friend. But we never really see the person inside. Because we cannot see the soul. The soul is so fragmental, so tiny, we can't see the soul. So what are we seeing? Our seeing is nothing but illusion. Because the same body that we have been seeing before, that we are interacting with, we are having dinner with, the same body is lying down on the ground before us, and we are saying, oh, this person has gone, this person has gone. Who has gone? Because the same body is there, that which you've been seeing before, so who has gone? But you say, oh, he's gone, he's gone. Then we start lamenting, he's gone, he's gone, he's gone. No. What is gone is the soul, the jiva, that has come to dwell in a particular body. So at a certain time, and when the time comes for that jiva to leave that body to go another destination, when that time comes, then the soul leaves. And of course, the most amazing thing is that the soul has no power over it. You have no power over when you leave your body or when you enter a particular body. You have no power over it, is it? You may have unlimited amount of money. When the times come for you to leave your body, you will leave your body, whether you like it or not. No chance. Now, who have the chance, who have the opportunity to control their destiny? Only the yogis. Because the yogis, they can, through the performance of yoga, through the austerities and all that, they can be able to control the nature. A yogi can control the nature. After by performing mystic practices, which takes a very long time, so a person can be in a position to really control their own destiny. There are 8 mystic yoga's results, perfections that one can get. There are 8 misperfections. One can you can be in one place and you can extend your hand to touch somewhere else. Or you can be very big or you can be very small. There's so many things like that. You can enter into another person's mind. Just like here in India, there are many, many yogis who are able to control people's mind. And by them controlling people's mind, people start saying, this person is God, that person must be God. So therefore we have so many, many gods in India. We have so many, many Bhagavans. Because these Bhagavans, they're able to control people's mind. Foolish. And people say, oh, it's Bhagavan this, Bhagavan that. So Srila Prabhupada said that in the West, the Western people, they can build so many cars and so many airplanes. But here in India, we can manufacture gods in India. There's a difference. In India makes God, where West, they make cars and all that. But this is just all based on illusion. Because you cannot become God by performing meditation. God is always God. God does not. It's not that Krishna became God because he's performing meditation. No, Krishna is always God. God is always God. Of course, he comes from time to time to be with his devotees. When his devotees desire to have his presence, so due to devotees' meditation, due to the devotees' intense eagerness to have the presence of the Lord, then the Lord comes. They call out, they pray, they perform so much austerities. Just like Pristini and Sutapa,
For many, many, many thousands of years, they perform so many, many austerities because they have a desire to have God as their child. And then the Lord came as their son. The Lord came as Krishna. The Lord came. Because that was their desire, and because they are very sincere, and they have no ulterior motive. Because you cannot perform any activities, let's say spiritual activities, and you have a motive for your own gratification. That also, that's also very bad. If you perform activities and with the intention of enjoying the results, then that is not recommended. For example, devotees are here, and they are rendering all kinds of devotional service, devotional activities, especially here in Krishna Balaram Temple. So devotees are rendering all kinds of devotional activities, but the purpose of the activities is to give enjoyment to Krishna, is to serve the Lord. They are not serving the Lord because they want more money, new house, new car, this, that, this, wife, children, this. No. That is ulterior motive. That's not why one is rendering devotional service. One is rendering devotional service only to please God, to please Krishna. That's the whole purpose. Said Aya Bilasita Sonyo Gana Kamadiana Britam. Ano Kuyena Krishna no Silana Bhakti Utaman, that no other desires, no other endeavor, no other purpose except to give Krishna no Silanam what is favorable for Krishna. No desire for karma or gain. Aya Abilasita, no other desires except to serve Krishna. Mahaprabhu said, Nadana Najana Nasundarim Kavitam Jagadish Kamaye Mama Jamani Swari Bhavata Bhakti Atukitoye. It is the prayer of devotees. That my dear Lord, I do not want wealth, Najana, I do not want followers, I do not want beautiful poetry. What do I want? I simply want to be your servant life after life. Mama Jamani Swari Bhavata Bhakti, I took it to life after life after life. I simply want to be your servant, that's all. And the Lord is very, very happy to such a devotee, to such a person. The Lord becomes very, very happy with them. Actually, when the devotees render service to the Lord, they are rendering their service just for the sake of service. Not because they want something. They just perform that service because they want the Lord to enjoy himself. So the Lord himself, he become purchased by his devotees. He become purchased by the love, by the loving service of his devotees. He mentioned that the Ajita Jita, that the Lord's name is called Ajita. Ajita means someone who cannot be conquered, unconquerable person. That is Ajita. The Lord is Ajita. No one can conquer him. Like when Krishna was here 5,000 years ago, so many demons came to Vrindavan to try to kill him. Putana, Trinavalta, Sakatasura, Agasura, Kesi, so many demons came to Vrindavan to try to kill God. The demons, they always think that they can kill God. Let's kill him. Even though God is there in their hearts, and without the presence of God in your heart, you cannot even exist. But they see, because of the illusion, they say, oh, let's kill God, let's kill him. Let's kill God. That's the mentality. So many big demons, they were here, tried to kill Krishna, try. But they were unable.
Even though Krishna was just a baby, he was just a child. Still, they were unable to even inflict any pain on Krishna. But they were all killed. They were all annihilated. All of them, they were killed. But the same Krishna who, the demons, who are so powerful like anything, they were unable to inflict any pain upon him. But his friends, they will challenge him. They will say, "Oh, Krishna, let us do wrestling. And I want to show you how powerful I am. I'm very, very strong." His friends, Subal, Sudama, Madhumanga, so many Krishna's friends, they will say, "Oh, Krishna, let's fight. Let's do some wrestling." So Krishna Shaka, so they say, "Tell Krishna, let's do some wrestling, let's do some fighting. And whoever gets defeated will have to carry the victor on his back." So which means me and you, we have to fight, we have to do some wrestling. And if I defeat you, then you have to carry me on your back. So that was the deal. So Krishna and his friends, they were engaged in wrestling when they were in the forest of Vrindavan doing their cow herding. So they will engage in wrestling, and Krishna will get defeated by them. So Krishna will get defeated by the friends, and when Krishna is defeated, and Krishna has to carry them on his back. So sometimes Krishna will carry Subal or Sudama, Sridham. Krishna will sometimes carry them on his back, because that is the wage, that is the deal. But such defeat, such fighting on defeat, what is it? This is something that is done out of love. Out of love of God. And the Lord himself, he become overcome with such love of his devotee. He become overcome with such love. And that's why even though the Supreme Personality, the most powerful person, the supreme opulence, still he become powerless. He become powerless in front of his devotees, with his devotees. He loses all his power. He's no more when he's with his devotees, he's no more the Supreme Lord. He's no more the Supreme Lord when he's with his devotees. Just like, that's why here in Vrindavan, the Christian devotee in Vrindavan, they don't see Krishna as God. They see him just as their most loving relatives. They don't see him God. They don't see him as God. So they see him as their most loving relatives. Just like one time, Nanda Maharaj, he was saying that, "Oh dear Krishna, before you were born, we were all we Brijabasis, we were always doing Narayana Katha, always praising, singing, praising Lord Narayan. And with such, so we've always been protected by Lord Narayan. No difficulty ever comes to our village. No difficulty ever comes here. However, my dear boy, since you were born, all we'll do is simply talking about you. All our kata, it's everything is all Krishna kata. No more Narayana kata, it's all Krishna kata." And that's why when the time for Indra Puja comes, and the Brijabasi, they were making a arrangement to do Indra Jaga, to worship Indra Dev, Lord Krishna says, "Don't do it. You do not have to worship Indra, you don't have to do it. Just worship Govardhan, because Govardhan is giving us so much amenity." So because of Krishna's sweet talk and all that, so all the Brijabasi, they trust Krishna. So they say, okay, even though it's our yearly tradition, we're not going to worship Indra because you have said so. So therefore, they worship Govardhan. So Nanda Maharaj is saying that, "Oh my dear Krishna, since you've been born,
All our thought, our prayers, our singing, it's all about you. Krishna this, Krishna this, Krishna that. And that's why now, every time, we're always getting so much difficulties. So many demons are coming to Vrindavan all the time. Putana came, Sakatasura came. So many of them came here to Vrindavan. Agasura came, Kaliya came. So why are we getting protected? How come? The reason why are we getting protected from all these demons? Why, even though they were coming, they did not inflict any damage upon us. Is because what we have done in the past, because of our own pious activities. He said that because we have worshipped Narayan so much in the past, we are worshiping him so much, we've done so much prayer of him in the past. So therefore, when all these demons are coming to Vrindavan, all these demons are coming, we have been able to be rescued from them. You understand my point? That because we have accumulated a lot of pious activities, because of our worship of Narayan in the past, now we are being saved from so many difficulties. When Putana puts you on a lab, you are rescued. And also when Tinavata took you up into the sky, still you are saved. All this is because of Narayana, who's given us the reward of our activities. So the Brajavas said they are not seeing Krishna as the one who is giving them all protection. They don't see they're giving us Krishna all the protection. They're only saying that, because of what you have done in the past, we are getting all this protection. So that's devotees' view, because devotees, they don't see Krishna as God. Of course, Krishna is always God. It's not that Krishna is not God. Yes, even though we may be situated in the topmost level of bhakti, rag bhakti, still, the Lord is still there. The Lord is always, Krishna is always Brahman, Paramatma, and Bhagavan. All those three things always there in him. But because of the love that is there between him and his loving devotees, that seems to be covered. So now, how do we relate this to this text that we're in today? When the Lord said, those, yetu ita abhyasuyanto, that those who disregard my teachings, they disregard my teachings, which are there in the Vedic scriptures. This teaching is being followed by all the sages, all the demigods. But I see there are always those certain classes of people who do not believe in the word of God. They don't believe in the scriptures. Why? Because of their envy of the Lord. So the Lord is saying that such persons, they are said to be bereft of all knowledge. They are fools. Fools, number one, just like the Lord said, Avajanati Mamuda. Avajanati Mamuda, the Lord said that those who are fools, they can never understand me. Those who are fools, they can never understand me. So the Lord says that. So this is what the Lord is saying, that those who do not believe in this teaching of mine, So the Lord is saying, this is just another rendition of this particular text. But know that those who are like fault-finding, they want to find fault in the scriptures, fault-finding persons who do not follow these instructions of mine become bereft of discrimination, cheated of all true knowledge, and ruined in all their endeavors for spiritual perfection. So if you don't have faith in the teachings of the Lord gives so many teachings. If you don't have faith in them, then what is your destination? What is your destination if you don't have faith in what the Lord is saying? What do you hope to achieve? What do you hope to achieve? Ultimately, you cannot achieve anything.
We can't achieve anything. Because these teachings of the Lord is what has been there since the beginning of creation. The Lord's teachings, it was been there since the beginning of creation. And the demigods started from Lord Brahma. They were able to execute all the activities based on the instructions of the Lord. In the beginning, the Lord gave Lord Brahma teachings by vibrating some mantras. And the Lord gave some teachings to Brahma. And then based on those teachings, Lord Brahma was able to meditate on them, and then was able to create the material world. He was able to do his creation, the material world. So it's all the demigods, all of them, everyone follows the Lord's teachings. And those who deviate from such teachings, they always run into difficulties. They run into difficulties, all those who deviate from such teachings. So the Lord is telling Arjuna that those who disregard this teaching, they do so strictly because out of envy of me, the Supreme Lord. Out of envy, so they disregard the teachings. They don't follow the teaching. Out of envy of the Lord. So therefore, in all their future endeavors, they will be ruined, which means they'll be frustrated, they'll be destroyed in all their future endeavors. Anyone who thinks that they can attain spiritual realization. Now we are talking of, what's his name? I think it was Hiranyakashipu, who did not believe in God. But he was performing the austerity, big austerity, was performing austerity so that he can become the most powerful person in the universe. So he performed austerity, he became the most powerful person. He got the benediction from Lord Brahma. But ultimately, what happened? He was killed. He was ultimately killed by the power of his own child. Because his child, Prahlad, he was a pure devotee of the Lord. So through the power of Prahlad, the Lord killed Hiranyakashipu. So therefore, it's very, very important to follow the Lord's teaching. The teaching is there in the Bhagavad Gita, in the Bhagavatam. So we follow it, and then by following such teachings, we can attain spiritual perfection. Without which, no perfection can be attained without that. So I'm going to stop here. If there is any question or comment, you can please go ahead. So we've been hearing the Bhagavad Gita. I just read the text again. Ye tuetad abhyasuyanto nanotishtanti me matam savagyana vimodanstam vidi nastam achetasa. But those who out of envy disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. So, thank you very much for listening. Srila Prabhupada ki. Go, people on there.